Hello children, I am your social science teacher and today we will learn about our environment, the very first chapter of your social science book from the geography section. Children, for your better understanding, I have divided the chapter into three broad topics. Our first topic is meaning and definition of environment. Second is domains of environment and third is components of environment. Let's begin. Children, as we all know that we live on earth in different types of surroundings. These surroundings make our environment. We eat, breathe, grow and then die. And thus this process goes on and the human race flourishes on earth. So we can say that everything that surrounds us is our environment. जो भी चीज़ें कुछ भी हमें सराउंड करते हैं उनको हम environment कहते हैं. The term environment refers to all the external conditions in which an organism lives. और जो भी conditions external और internal एक organism और आई वुड से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ कंटिन्यू करने के लिए चाहिए वो सब हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड है. बेसिकली द टर्म एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स नेबरहुड. जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो हमारे फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है जिसका मतलब है नेबरहुड. It also includes things created by human beings. और environment में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी include हैं जो हमें naturally हैं, बाकी जो हमने man-made चीज़ें बनाई गई हैं. Also children, World Environment Day is celebrated on 5th June every year to spread awareness about the environment. So now we can define environment as the natural surroundings or the conditions in which living beings exist and develop their characteristics is known as environment. तो हम ये कह सकते हैं कि सारी ऐसी नेचुरल और मैन-मेड चीज़ें या कंडीशंस जो एक लिविंग बीइंग को लाइफ सपोर्ट करने के लिए और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए चाहिए वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स. एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं. फर्स्ट इज बायोटिक and second is abiotic. Biotic environment. The biotic environment includes all living things in an ecosystem, which includes animals, plants and the microorganisms. Biotic environment एक ऐसा environment है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ living things include करते हैं जैसे कि plants, animals और microorganisms. Next is abiotic environment. Abiotic environment refers to all non-living things in an ecosystem. जो abiotic environment है वो include करता है सारी non-living things ecosystem में. For example, water, air and land. The land on which we live is not a human-made thing. जिस लैंड पर हम रहते हैं वो एक ह्यूमन मेड थिंग नहीं है. सेम विद द वाटर एंड एयर. सो वी कैन से दैट अ बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all the natural things which are non-living beings. Now let us study the 4 domains of the earth. The first domain of the earth is the lithosphere. The lithosphere is the outermost solid surface layer of the earth. It is also sometimes called the crust. Lithosphere क्या है? Lithosphere is the solid first layer of earth, or we can say the land portion is known as lithosphere. Next is hydrosphere.
The hydrosphere is composed of all the water on or near the earth. This includes the ocean, rivers, lakes, and even the moisture in the air. जितना भी water portion is available on earth, or we can say the water bodies, oceans, rivers, lakes, and seas comes under the hydrosphere. Then next is the atmosphere. Atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. Atmosphere एक layer है air की जो कि अपने earth को surround करती है. Now next is the biosphere. The biosphere is the narrow zone where land, water and air come into contact with each other is called the biosphere. बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है अर्थ का वेयर ऑल अदर थ्री स्फेयर्स विच इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. तीनों स्फेयर्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं दे फॉर्म्ड अ न्यू स्फेयर नोन एज बायोस्फेयर. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फेयर आर कॉल्ड प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फेयर में रह रहे हैं उनको दो क्राइटेरिया दिए गए हैं. फर्स्ट इज प्लांट किंगडम एंड सेकेंड इज एनिमल किंगडम. So children, our next topic is components of environment. The components of environment are of two types. One is man-made and second is natural. As the name suggests, man-made. The things which are made by man are known as man-made environment. For example, buildings, parks, bridges, roads. These components are made by men for their own convenience. Then next is natural environment. Natural and components of environment includes hydrosphere, atmosphere, lithosphere, or the things which are already present in the nature. For example, water, air and land. Nobody has made the water, air or land. They are already present in the environment. Children, the last and the most important topic of this chapter is ecosystem. So let us understand what an ecosystem is. An ecosystem is the interaction of living community of plants and animals with the environment and each other. Ecosystem एक ऐसा इंटरैक्शन है जो लिविंग बीइंग और प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक दूसरे का और उन दोनों का एनवायरनमेंट पे इंटरैक्शन और डिपेंडेंसी शो करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, sun is the main source of energy. As we all know, we get solar energy from the sun. Sun is the main source of energy. Plants grow due to solar energy. ऑल राइट, प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सन की सोलर एनर्जी से करते हैं. नाउ देन दीज प्लांट्स आर ईटन बाय गोट्स, cows, buffaloes. When these plants are eaten by cows, buffaloes and goats, now these animals which eat plants are tamed, or I would say pets, by human beings. इन एनिमल्स को हम एज अ पेट एनिमल अपने घर में रखते हैं, तो इन रिटर्न दे गिव अस डेयरी प्रोडक्ट्स, दे गिव अस मिल्क. ऑल राइट, दिस चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज फूड चेन. So food chain is a sequence of events where one organism eats another. So children, this was all in your first chapter of geography. I hope you all have understood it well. Thank you.